Okay, Fiza went. How was the experience? मैंने सुना है कि it was a bit difficult this time. But जैसा भी हुआ, don't worry too much about it. अभी keep your focus on the MDCAT. That's nice. So in this transport वाला chapter, it's a very heavy chapter. In the sense कि इसमें 3 major topics cover हो रहे हैं. You have plant transport, then you have animal transport. अब उसके भी सब topics हैं. There's blood and its components. Then there's circulation. Circulation in animals भी है थोड़ा बहुत उसमें. फिर the entire human heart and the cardiac cycle and blood vessels का structure. फिर lymphatics भी है, disorders भी हैं, and then you have a very major chunk immunity वाला. So plant transport se I'm going to start, but the thing is I'm not going to cover all of plant transport. I'm just going to give this overview, and इसमें जो ये water potential वाले जो terms है ना, water potential, osmotic potential and solute potential, I am going to explain these क्योंकि ये ज़रा सा ज़्यादा confusing होते हैं, and when I was doing this, I would forget this every time. I would learn it and then I would forget it. फिर मुझे बार-बार revise करना पड़ता था. So I'm going to try and make it easy for you. और वो जो बाकी चीज़ें हैं, phloem loading and xylem, phloem, transpiration and all of that, I think वो notes से easily cover हो जाएगा. Let me know in the chat if you have any questions या कुछ कहना है अगर. Is that okay with everyone? So yeah. So plant transport occurs at 3 levels, ठीक है? So transport can be from one cell to another. Cell to cell भी होता है, short distance भी होता है और long distance भी होता है. Cell to cell transport में what happens is कि water, food, gases move across the cell membrane. एक cell से लेके दूसरे cell तक, ठीक है? Cells आपस में बहुत closely aligned होते हैं, plant cells, ठीक है? एक cell के अंदर पहले पानी गया. That water will travel along from one cell to another until and unless like the entire tissue is has received its supply. ठीक है? जैसे जब root hair से लेके जब root hair में root hair cells of the xylem, this is how water will be, for instance, transported from one cell to another. This is cell to cell. फिर short distance होता है which happens at the tissue level. Sorry, ये root hair xylem वाली example यहाँ पे. Root hair से लेके xylem तक. This is like tissue level from one tissue type to another. अब leaf cells हैं जहाँ पे photosynthesis हो रहा है. The leaf cells, those cells of the leaf which are producing food by photosynthesis, उन cells से जब phloem के अंदर load होगा, so that is one tissue type going into another tissue type, ठीक है? Material going from one tissue type into another tissue type. That is short distance transport. Then you have long distance. Long distance में we know very well कि एक part which is very distant from another part. अब जैसे leaves इस तरफ हैं tree के and the roots are इधर at the base. So water will be transported from the xylem, water and salts, along the entire trunk and all the way up to the leaves. That is long distance. इसी तरह the leaves will produce food by photosynthesis and that food has to be transported for a long distance to the other parts of the plant. Okay? So this is what is meant by cell to cell, short distance and long distance transport. अब जो इस वक्त जो मैं कवर करा रही हूँ that will be these water potential and solute potential वाली terms that we used for concentration of solutions और ये सब. So water potential हम ये काफ़ी junior classes से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि when we talk about osmosis, so we say कि osmosis is the flow of water molecules from a region of higher water potential to a region of lower water potential. So what is water potential exactly? It is the energy of free water molecules, right? And so it might be a little confusing to see the word energy applied here, लेकिन definitions को हम इस तरह से question करते नहीं हैं. So when there is
फ्री का मतलब सिंपली ये है कि water is present in its pure form. You have a container of water and there is no other solute dissolved in it. सिर्फ water molecules हैं इसमें, nothing else. So these water molecules are free because there is no solute to influence the water molecules and to limit its freedom. ठीक है? If there is a very important concept in biology, कि water will always follow solute. अब वी नो कि सॉल्यूट ऑब्वियसली वही चीज होगी विच इन द फर्स्ट प्लेस विल डिजॉल्व इन वाटर. तो अगर आप सैंड ले लें तो सैंड इज नॉट अ सॉल्यूट, इट विल नॉट डिजॉल्व इन वाटर. सॉल्यूट्स विड बी शुगर्स, सॉल्यूट्स विड बी सॉल्ट्स, सॉल्यूट्स विड बी आयंस. ठीक है? सो वेन एवर these solutes are present तो water follow करेगा उधर. अब इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल उसमें है, किडनी में है, वेर जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है तो जब सॉल्ट्स और आयंस रीअब्सॉर्ब होते हैं तो पानी भी उनके पीछे पीछे जाता है. सो वाटर पोटेंशियल is simply the energy of free water molecules. If you have water, pure water in a container, so there is no solute to limit the movement of water. There is nothing to affect it. So water molecules are free. So that is water potential. अब we know कि water moves from high to low water potential. ठीक है? Water potential का symbol ये है. It's called Xi. It's Greek. This is the symbol for water potential. And water potential is measured in units of pressure. For example, megapascals. ये भी learn करने वाली चीज है. And now this is very important. Pure water has maximum water potential. ये तो समझ आ रहा है कि pure water has maximum water potential क्योंकि obviously these are free water molecules. There is nothing to limit its freedom. But the thing is कि ये maximum water potential की value 0 है. This is what is important. Maximum water potential is given a value of 0. Any questions in understanding this so far? When will we get the notes? अच्छा, whenever the class ends, मैं notes forward कर देती हूँ आगे. तो अभी भी problem तो नहीं होना चाहिए notes का किसी को भी. So let's move on. Now adding a solute will make the water potential negative. It will lower the water potential. So अगर मैं solute डाल दूंगी तो water molecules का freedom will be limited. They will no longer be free. If they're no longer free, automatically water potential will decrease. So adding a solute will make the water potential negative. So this means that a solution will always have a negative water potential. अब इसमें they can give you questions. They could say कि एक salt, अब एक लंबी चौड़ी they will give you a story कि आपने dissolve किया, एक आपने salt solution आपने prepare किया. They might even give you a concentration. ठीक है? 10 molar salt solution. इसका water potential की value नहीं, क्या कौन सी value नहीं होनी चाहिए, which is incorrect. They could say कि इसका water potential is minus 0.3. This could say इसका water potential is minus 1. वो बोलेंगे water potential is 0. तो इसमें what do you think should be the answer? What is incorrect? Yeah, so like the water potential of a solution cannot be 0 because 0 is the maximum value. And we know कि solution का water potential हमेशा negative होगा. Simply because solute is present. Right? So with that said, let's move on. Then you have a term called solute potential, which is also called osmotic potential. So solute potential का symbol देख लो, it is this. The same symbol but with a subscript S नीचे. Addition of solute molecules decreases the water potential of a medium. ठीक है? ये हमने establish कर लिया. The amount by which the water potential is decreased. This is simply the decrease in the water potential because of addition of solute. इसको बोलते हैं solute potential. This is the decrease in the water potential. For example, मेरे पास एक I just had a beaker of water and the water potential is 0.
I added a solute to it, and उस solute का solute potential, सॉरी, उस solute को डालने के बाद उस solution का जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो गया, वो चेंज हो गया टू अ वैल्यू, लेट्स से माइनस 1.7. So can someone tell me what the solute potential should be based on this definition? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आई वॉन्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू. मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक बीकर ऑफ वाटर था, मैंने उसमें सॉल्यूट डाल दिया, मैंने उसका सोल्यूशन बना दिया. सोल्यूशन बनाने के बाद बाय सम मीन्स मैंने उसका वाटर पोटेंशियल मेजर किया. तो वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूशन क्या होगा? सॉरी, वाटर पोटेंशियल ऑफ द सोल्यूशन वुड बी -1.7. ये मैंने वैल्यू निकाल ली, ये मैंने मेजर की वैल्यू आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट. आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट मैंने सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल मेजर किया -1.7, और मैंने डिफाइन किया सॉल्यूट पोटेंशियल को एज द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल आफ्टर एडिंग द सॉल्यूट. कितना कम हो गया? तो अब मुझे सॉल्यूट पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए, ये चाहिए. स्मॉल कैलकुलेशन. एग्जैक्टली, इट्स लाइक वेरी बेसिक. तो इसमें द सॉल्यूट पोटेंशियल इज सिंपली द डिक्रीज. It fell by 1.7. So it is also defined as the tendency to attract water molecules when solutions of two different concentrations are separated by a semi-permeable membrane. अभी मैंने बताया था कि solute will always attract water. So this is exactly what they're saying. When you separate two solutions from across a semi-permeable membrane, तो जहाँ पे solute ज़्यादा होगा वो अपनी तरफ पानी खींच लेगा. It will attract water. So now look at this little diagram and just fill in the spaces, fill in the blanks. Everything is in, all the information is given. Guys, I need a response. So you're saying, kya? A will attract. Haan, you're right. A will attract. Let's write that down. A will attract, but what will it attract? Water to solution from solution B. Haan. So solution A will attract water from solution B. And as a result of that, B ka water potential will further decrease. उसका water potential decrease इसलिए होगा क्योंकि पानी सारा निकल गया, basically यहाँ पे पानी आ गया. Then you have a term called pressure potential. Pressure potential is what? It's, now we're talking in terms of plant cells. So yeah, so you have a plant cell, and when the plant cell absorbs water by osmosis, the cell will begin to swell up and the cell sap. Okay, this is what a plant cell looks like. There is a vacuole. Okay, plant cells have one large vacuole, और इस vacuole के अंदर cell sap है. This is the cell wall. This is the cytoplasm. ठीक है, अब इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता पानी आ रहा है. It is absorbing water. Now, as a result of that, the vacuole will become large, and it will start to, I have the diagram on the next page. Oh, yeah. Okay. So, see, eventually, the vacuole enlarged to such an extent कि वो जाके जो सेल वॉल है उसके साथ जो सेल मेम्ब्रेन है उसके साथ ही it is making contact. The cytoplasm has been pushed. It has been, you can't even see the cytoplasm at this point because vacuole इतना बड़ा हो गया, इतना सेल ने इतना सारा पानी absorb कर लिया. Now what is happening is that the plant cell wall
the cell wall is very elastic, right? And when you have the cell sap and the vacuole pushing against it, तो एक pressure exert हो रहा है यहाँ पे. It is exerting a pressure. It is exerting a pressure on the cell wall. But because the cell wall is elastic and the cell wall is firm, so it will also exert an opposing pressure. So you have a pressure on the cell wall and then you have a pressure by the cell wall. So pressure potential is simply the pressure that the cell wall is going to exert. So pressure by the cell wall is pressure potential. The pressure potential opposes the movement of the water into the cell. Obviously, ये एक opposing pressure है ना. The cell wall जो pressure exert कर रही है, that is acting in opposition. It is opposing the pressure that the cell sap or the cell cytoplasm is exerting on the cell wall. तो ये opposite response है. When the cell wall is fully stretched and pressure potential reaches its maximum, the cell cannot take any more water and it is said to be turgid. Then, I hope this was clear. Is the solute potential zero in any condition? हाँ, हो सकता है zero. Zero कब होगा solute potential? जब solution exist ही नहीं करता. अगर प्योर वाटर है एक कंटेनर के अंदर विच हैज नो सॉल्यूट डिजॉल्व इन इट, तो उसका वाटर पोटेंशियल तो जीरो होगा ही, लेकिन इसको सॉल्यूट पोटेंशियल भी जीरो होगा क्योंकि इसमें सॉल्यूट है ही नहीं. इफ दैट मेक्स सेंस टू यू. Was that question answered, Atif Hassan? फेडरल में लिखा है इन डिस्टिल्ड वाटर जीरो. वही बात है, प्योर वाटर. अब डिस्टिल्ड वाटर लिखने की इंपॉर्टेंस सिर्फ ये है कि डिस्टिल्ड वाटर, see the water that comes in our taps for instance, सही है जी, जो पानी हम यूज करते हैं नॉर्मली, that is not pure water. उसके अंदर कुछ ना कुछ आयंस डिसॉल्व होते हैं. द मिनरल वाटर दैट वी ड्रिंक, उसके अंदर मिनरल्स हैं, उसके अंदर डिफरेंट आयंस हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं, तो इट इज नॉट प्योर. आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो फिर उसमें टैप वाटर में भी मिनरल्स होते हैं, आयंस होते हैं, तो दीज आर नॉट प्योर. लेकिन अगर आप उस पानी को डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजार के, इफ यू वर टू रिमूव ऑल द आयंस, रिमूव ऑल द इलेक्ट्रोलाइट्स, रिमूव ऑल द सॉल्यूट्स दैट आर डिसॉल्व्ड इन इट, then you would get pure water in its distilled form. So that is what they mean distilled. Distilled water, pure water एक ही चीज है. And they are right कि distilled water का water potential is zero, because like I said कि उसमें water molecules are free. There is no solute to influence its movement. So distilled water में water potential is also zero, and because there is no solute, solute potential would also be zero. I hope that is clear. हाँ, ठीक है. So pressure potential हो गया. Now we have osmotic pressure. Osmotic pressure is the amount of pressure that must be applied on a solution to prevent the movement of water into it when the solution is separated from pure water by a semi-permeable membrane. So let's see. Again, the same diagram. मैंने इन दो solutions को, now you can see that these solutions have different concentrations. A has more solute visibly, A is more concentrated and B is less concentrated. ठीक है? And we know कि जहाँ पे solute ज़्यादा होगा वो solute पानी को अपनी तरफ बुलाएगा. And what that means is कि osmosis will occur. Now, osmotic pressure is simply कि I want to prevent this movement. I don't want water molecules from B to go to A. I want to prevent this from happening. तो इसको करने के लिए आई वुड डू समथिंग, मैं कुछ ना कुछ काम करूंगी. आई वुड चेंज द, आई थिंक देयर इज अ डायग्राम गिवन इन द सिंध वाली बुक समवेयर. उन्होंने कुछ ये इस तरह से किया हुआ भी है, सम एक्सपेरिमेंट. लेट्स गो देयर. कहाँ गया? कहीं क्वेश्चन था या कुछ? they done something. There was a question on this actually.
You see if I can find that question and then I'll let you know. So let's just stick to this, ठीक है? The pressure that must be applied on a solution. कोई भी तरीका हो सकता है. I could do anything to the system to prevent this movement. तो अगर मैं कोई force लगा रही हूँ या कुछ भी extra काम कर रही हूँ to prevent this movement, तो उसकी numerical value है ये osmotic pressure. The pressure that must be applied to prevent the movement of water into it. सही है? मुझे extra काम करना पड़ेगा. If I wanted to stop this movement of water molecules from solution B to solution A, I would need to do some extra effort, and this extra effort is called the osmotic pressure, and it is proportional to the solute concentration. ठीक है? Obviously, अगर यहाँ पे difference ज़्यादा होगा, अगर मैं यहाँ पे A में और solute add कर दूँ, so it will obviously attract water molecules with an even greater tendency. ठीक है? वो और ज़्यादा अपनी तरफ attract करेगा. तो मुझे और ज़्यादा काम करना पड़ेगा to prevent this movement from taking place. So, osmotic pressure is directly proportional to solute concentration. ठीक है? Does that make sense? Okay. You all should learn from Fiza. She went to give the test today and she's also listening in class. So, अब ये जितने भी terms पढ़े ना, I know कि this can get confusing. Pressure potential, when you are revising it the last minute, तो osmotic pressure, osmotic potential, solute potential, ये सब mix हो जाता है, and there's a lot of stress उस वक्त revision का, and you feel कि ये भी जाके revise करना है, ये भी जाके revise करना है. तो just understand कि these are interchangeable terms. जैसे synonyms होते हैं ना, मैं good बोलूँ या excellent बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, तो these terms they all mean the same thing. Good and nice mean the same thing. So solute potential and osmotic potential, they are the same thing, and pressure potential, osmotic pressure is directly proportional to these terms. Solute potential is the same thing as osmotic potential. ठीक है? And osmotic pressure is directly proportional to solute potential. ठीक है? And osmotic pressure is directly proportional to osmotic potential. And also मैंने pressure potential भी बताया था ना, तो pressure potential भी is directly proportional to the concentration of this. बल्कि pressure potential भी obviously अगर cell में उस वक्त cell अगर बहुत ज़्यादा पानी ले रहा है at one time, let's say कि the cell is in a state बहुत ही हाई कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, सेल बिल्कुल प्यासा डिहाइड्रेटेड स्टेट में है और उसके अंदर सडनली पानी आना शुरू हो जाता है, राइट? तो एट दैट पॉइंट इन टाइम द प्रेशर पोटेंशियल वुड बी हाई बिकॉज ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पानी उसमें आएगा तो द सेल वॉल वुड हैव टू एक्सर्ट अ ग्रेटर प्रेशर. सो इफ यू जस्ट रिमेंबर कि दीज टर्म्स आर द सेम थिंग एज कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट. जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा इन अ सोल्यूशन वो उतनी ज़्यादा अपनी तरफ पानी अट्रैक्ट करेगा, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ऑल ऑफ दीज वैल्यूज विल बी proportional to it. So we can say कि water moves from low concentration or low solute potential or low osmotic potential or low osmotic pressure to high. ठीक है, concentration, solute potential, osmotic potential, osmotic pressure. तो अगर कोई पूछे कि water moves from dash osmotic potential to dash osmotic potential, तो the answer would be from low to high because it means the same thing as concentration of the solute. ये समझ आ रहा है? ठीक है, तो प्लांट ट्रांसपोर्ट इज ऑलमोस्ट ठीक है. वाटर रिलेशंस ऑफ प्लांट सेल. अब वी हैव बिन असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यूज अभी. तो मैं कहा था कि मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल 0 होता है और वो एक प्योर
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो होता है एंड ऑल ऑफ दिस. सो दिस इज एन इक्वेशन. द इक्वेशन यू शुड नो, बहुत छोटू सा है कि water potential is the sum of solute potential and pressure potential. So just know this, and also know that solute potential and water potential, they act in opposite direction. Okay, pressure potential, sorry, pressure potential, they act in opposite direction. एंड अभी ये मैंने एक्सप्लेन किया था कि सेल वॉल जो अपोजिट प्रेशर एग्जर्ट करेगी इन ऑर्डर टू रेजिस्ट ऑस्मोसिस, तो दैट इज द प्रेशर पोटेंशियल एंड इट इज ऑपोजिट टू सॉल्यूट पोटेंशियल. तो इसका मतलब ऑपोजिट का मतलब है कि उनके साइंस भी ऑपोजिट होंगे. सो दिस इज थोड़ा बहुत मैथ है अब इसमें, ठीक है. प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ सॉल्यूट पोटेंशियल. तो अगर एक टर्जिड सेल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्जिड सेल में द प्रेशर पोटेंशियल इज इक्वल एंड ऑपोजिट. इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों? क्योंकि टर्जिड सेल के अंदर मैक्सिमम पानी आ चुका है, ठीक है. दिस इज लाइक द मैक्सिमम दैट यू कैन रीच. दिस इज मैक्सिमम. तो इसके अंदर अब मैक्सिमम आ चुका है. अब इससे ज्यादा वो नहीं बेयर कर पाएगा. द सेल वॉल विल नॉट बी एबल टू. तो इन दिस स्टेट वी कॉल द सेल टर्जिड. एंड टर्जिड सेल जो प्रेशर पोटेंशियल एक्सर्ट कर रहा है, that is equal and opposite to the solute potential of the cell sap. So this is how we would write it. Pressure potential is a negative of solute potential. और अगर हम इसको equation के अंदर put करें तो we would see solute potential plus minus the solute potential again, तो फिर it gives you a zero value. And this also means के water potential is zero in two conditions. जहाँ पे यू हैव प्योर वाटर इन अ कंटेनर या फिर एक टर्जिड प्लांट सेल है. Just remember this and remember the equation. Any questions? Which pathway is important for water movement? ये question भेजा भी था किसी ने in the group, and I think हमने काफी इस पे मैंने ढूंढा भी था. And कौन सा था वो? Apoplastic. Apoplastic was the most important. अब ये books में कहीं दिया हुआ नहीं था. I'll refer back to the group and let you know, because ये सब factual. अच्छा, you have something to say? Go on. Wait. Let's see. I have the book open इधर ना. यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है. In federal, it's cytoplasm, symplastic pathway. हाँ, if a book says something, learn it, ठीक है? Because like Google में variable answers आते हैं. Federal में it's cytoplasm, so you learn symplastic pathway, so you learn that. Sindh में there is no definitive answer given. अगर फेडरल में दिया हुआ है, अगर पंजाब में दिया हुआ है, अगर किसी और बुक में जो भी दिया हुआ है, तो you learn that. Because if the textbook is making a definitive statement, तो आप उसको question नहीं करें. I think अब confusion clear हो गया होगा, क्योंकि अब ये facts है ना, तो there's no other way. Like, do you want to know why it is the most important? Simplest important क्यों है? This I can explain. ठीक है. So see, what is happening in the symplastic pathway is okay, you have wait a minute. You have one cell
then you have another cell, then you have a third cell. They're very close to together. अब इनके जो क्या प्रॉब्लम, आई हैव टेरेबल ड्राइंग स्किल्स, ठीक है, और वैसे अभी जल्दी हो रही है. सी, सो दीज आर, पेज लॉस्ट हो जाता है. हाँ, ठीक है. अब यहाँ पे देर आर कनेक्शंस, इनको बोलते हैं ठीक है, दीज आर सिंपली channels of cytoplasm. There are cytoplasmic channels. अब इसमें होता क्या है कि अगर इस सेल के अंदर पानी आता है, या कोई भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हाँ, वाटर मेनली, वाटर एंड सॉल्ट्स, राइट, वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम द जाइलम, फ्रॉम द सॉइल सोल्यूशन. तो वाटर एंड सॉल्ट्स विल एंटर, एंड देन वो इंस्टेड ऑफ लाइक क्रॉसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट अभी बताया था ना मैंने कि प्लाज्मा लाइक यू हैव सिंपली ऐसे, वो एक दफ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, फिर दूसरी दफ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा. तो इसमें क्या है, यू हैव ओनली वन क्रॉसिंग ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो कब होगी, जब सॉइल से पानी अंदर आएगा. ठीक है, जब सॉइल से अंदर पानी आएगा ना, तो फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्रॉस होगी. उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज बीइंग बाईपास्ड. व्हाई? बिकॉज दी साइटोप्लाज्मिक चैनल्स आर डायरेक्ट. It just requires one crossing of the plasma membrane. Even in the apoplastic pathway, you have to cross the plasma membrane, क्योंकि सेल वॉल तो परमिएबल है, पानी आ जाएगा, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके फिर अंदर सेल के अंदर पानी आएगा. Do you get me? In the apoplastic pathway, सेल वॉल तो क्रॉस हो जाएगी आराम से, लेकिन सेल मेम्ब्रेन would have to be crossed every time a new cell, every time the water has to be transported to a new cell. ठीक है. अब अगर let's say कि अगर normally we have another diagram. एपोप्लास्टिक के अंदर वाटर सेल वॉल को तो कर लेगा, लेकिन फिर अगेन यू वुड लाइक यू नो नीड, इट्स स्टिल लाइक नॉट एज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आती हैं इन द एंडोडर्मिस, एक रीजन आएगा वेयर दिस वुड हैव टू स्टॉप, क्योंकि वो जगह इम्पर्मिएबल है, वहाँ पे वाटर कैन नॉट फ्लो अलॉन्ग एज इजीली. तो इसीलिए symplastic pathway is considered to be more important, क्योंकि plasma membrane is basically being bypassed. That's all there is to know. No further membrane to cross. हाँ, no further membrane to cross. That's it. I think plant transport cover हो गया है, as far as I had prepared this. Let's move on to animal transport. अच्छा, do you people mind if I extend this to like 10:30? Because अभी कोई और क्लास तो है नहीं आज. 1 hour में let's see how much of transport we can cover. फिर बाकी we'll have to do tomorrow. 11 तक कर लें. Tahira has an objection. So Tahira, you can leave, and then you can join us tomorrow after like you've ऐसा कर लेते हैं. Complete it today. Complete नहीं हो पाएगा, because I have to do this in depth at least. कोई problem नहीं है ये बोल रही. अच्छा, okay, ठीक है, right, no problem, that's nice. 10:30 तक कर लेते हैं. So for transport in animals, अब we know, अभी हमने animal kingdom revise किया तो नहीं है, लेकिन we know all the names of the phylums. ठीक है, इतना तो अब revision हो ही रहा होगा. So we have Porifera. These are the most primitive. सही है.
अब ट्रांसपोर्ट की नीड इनको नहीं है एज सच. यहाँ पे सिंपली डिफ्यूजन, लाइक इफ यू नो द बॉडी ऑफ अ स्पंज, ठीक है, अजीब सा होता है. देयर आर ऑल दीज पोर्स, पानी सिंपली पोर्स के अंदर एंटर, पोर्स से एंटर होता है. देयर आर वेरी प्रिमिटिव छोटे छोटे से सेल्स होते हैं थोड़े बहुत, एंड सिंपल डिफ्यूजन से इनका काम हो जाता है. देन यू हैव नाइडेरिया, वो ज़रा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं. फिर फ्लैटवर्म्स, फिर नीमाटोड्स, फिर एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स. सो इवेंचुअली व्हेन यू रीच कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स भी हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं, एंड देन यू रीच लाइक द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ लाइफ विच आर मैमल्स. दे आर द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, सबसे लाइक सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैमल्स हैं. तो यहाँ पे इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम और ये पोरिफ्रा का सिंपल डिफ्यूजन अगर आप कंपेयर करें तो यू कैन सी कि कितना डिफरेंस आ गया एवोल्यूशन में आहिस्ता आहिस्ता. वाई? बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंक्रीजिंग एवोल्यूशनरी चेंजेस. तो हमारी नीड ऐसी है कि वी नीड अ कॉम्प्लेक्स mechanism of transport. We need a complex circulatory system, and not just mammals, even vertebrates in general. We have a general pattern of circulatory system jisme there is a pumping organ which is the heart. Here we have blood vessels, and then we have a circulating fluid. So there are different types of circulatory systems, and we'll skip right to open versus closed. Open circulatory systems are those जिसमें definite blood vessels are absent, and this is seen in arthropods and some mollusks. Arthropods में we have like cockroaches and spiders, और ये सारे animals, and mollusks में we have snails and the octopus. इन सब में वो ऑक्टोपस के अंदर मुझे नहीं पता क्लोज होता है कि ओपन होता है, तो मैं इस पे एग्जाम्पल नहीं लिख रही. So this is present in phylum Arthropoda and Mollusca, in closed circulatory system, annelids में, vertebrates में, और cephalopods में. Cephalopoda is actually this class of mollusks, ना? Is a class of mollusca. इसमें आते हैं octopuses. So octopuses will have a closed circulatory system, and also squids. So blood vessels are absent in an open circulatory system, and so what happens is that it open blood sinuses, sinus मतलब space, and ये जो उनकी body cavity होती है इसको फिर hemocoel कहते हैं क्योंकि इसके अंदर blood flow कर रहा है. See, this is what it looks like. Open circulatory system है, there are no blood vessels whatsoever, और ये जो body cavity है it is called the hemocoel क्योंकि इसके अंदर इनका blood circulate कर रहा है, and this blood is called hemolymph. Wait a minute. Hemolymph. It is called hemolymph because the blood is colorless. Colorless क्यों है? Because there is no pigments. No pigments, no hemoglobin. Blood is in direct contact with the tissues, and blood is not used for the transport of oxygen. It makes sense. No hemoglobin, तो इसका मतलब है कि नहीं हो रहा use transport के लिए. And why? How is it different from closed circulatory system? You have blood vessels. Blood flows within the blood vessels, and the blood is red because of the presence of hemoglobin. Hemoglobin is used for the transport of oxygen, and blood is not in direct contact with tissues. Blood vessels are in direct contact with tissues, and those blood vessels are called capillaries. See, now there's an entire table in the Sindh book. अब इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ जो चीज़ याद करने की है. द ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड फिल्ड साइनसेस, द ब्लड फ्लोज थ्रू क्लोज ब्लड वेसल्स, वही बात है. ब्लड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज, ये भी हम कर चुके हैं. द सीलम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड. अब अच्छा, इसमें कंपैरिजन अर्थवर्म के साथ किया हुआ है, तो अर्थवर्म इज व्हाट? एनालिडा, एंड कॉकरोच इज आर्थ्रोपोडा.
उन्होंने कंपैरिजन से बता रहे हैं वो. अब आई एम ट्राइंग टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन वो जो पूछेंगे वो फैक्चुअल रिकॉल पूछेंगे, तो मैं इसीलिए हाईलाइट कर रही हूँ, सो यू नो कि कौन सी चीज़ याद करने के लिए एंड कौन सी चीज़ याद करने की नहीं है. अब द सीलम इज ग्रेटली रिड्यूस्ड, द सीलम इज लार्ज. लर्न दिस. फिर देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड. क्यों? क्योंकि वो सब एक ही चीज़ है. उनके पास ब्लड जैसी चीज़ जब है ही नहीं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उनके पास डिफरेंस नहीं बना हुआ कोई भी. इट इज ऑल द सेम थिंग, हीमोलिम्फ. एक ही चीज़ सर्कुलेट करिए एंड दैट इज हीमोलिम्फ. यहाँ पे क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड अलग है, ब्लड अलग है. वी विल सी व्हाट इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज इन अ व्हाइल. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड, अब इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग कि a single dorsal vessel runs mid dorsally from the head to the posterior end. यहाँ पे एक dorsal vessel है and one ventral vessel. Only one dorsal vessel. और यहाँ पे you have one dorsal plus one ventral. फिर blood moves forward in the dorsal vessel and backward in the ventral vessel. अच्छा, कॉकरोच के हार्ट में 13 चेम्बर्स हैं, रिमेंबर दिस. एंड ब्लड वाली बात हो गई थी, बस इतना सही है इसमें. ओपन एंड सर्कुलेशन, ओपन एंड क्लोज्ड. Now this is a bit conceptual, single circuit versus double circuit circulation. अब इसमें we're going to come to vertebrates. Vertebrates में we have these groups: fish, amphibians, reptiles and mammals. तो fish के अंदर we have the simplest type of circulation among the vertebrates, and blood flows unidirectionally from the two-chambered heart through the gills and the rest of the body. Let me explain this. Reading बाद में कर लेंगे, पहले explain कर देती हूँ. Fish के अंदर you have a very simple system. Obviously it is more complex than cockroaches क्योंकि like chordata बाद में है, arthropods पहले हैं. So first know that it is a two-chambered heart. Two-chambered heart in fish. One atrium, one ventricle. ठीक है. And इनका heart is S-shaped. Remember this. S-shaped. So होता क्या है कि they have gills. जैसे हमारे पास lungs होते हैं, they have gills for oxygenation. Then they have the heart, and this is like the rest of the body. So what happens is कि body से blood, what sort of blood would this be? This would be deoxygenated blood. This is deoxygenated blood. And deoxygenated blood collected from the body tissues goes to the heart. Heart में ये atrium से enter होता है, ठीक है? It enters the atrium and then it leads to the ventricle to enter the gills. And then gills में oxygenation होती है. अब gills से directly body में दोबारा से oxygenated blood आता है. Oxygenated blood comes directly from the gills to the body. So if you compare this to humans, if you compare this to mammals, हमारे हार्ट के अंदर एक तो ऑब्वियसली देयर आर 4 चेम्बर्स, 2 एट्रिया, 2 वेंट्रिकल्स, बट वी नो कि हमारी बॉडी में ब्लड हार्ट से 2 दफ़ा गुजरता है. हमारे पास ऐसा नहीं कि द पल्मोनरी वेन विल डायरेक्टली कैरी ब्लड टू द बॉडी टिश्यूज, ऐसा तो नहीं होता. इट हैज़ टू गो थ्रू द हार्ट. बट इन फिश the oxygenated blood coming from the gills will not go to the heart and it will directly come to the body tissues. So this is unidirectional flow of blood. See, body से गया, just follow the arrows. कहीं भी repetition नहीं होगा. See, क्या हुआ, खराब हो गया. This is like more prominent. Follow the arrow. यहाँ से गया, यहाँ से गया, and then back इधर. कहीं भी मेरा पाथ ब्रेक नहीं हुआ. इट इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो. यूनिडायरेक्शनल.
body to heart to gills and then back to the body. It's like this single circuit. See, single circuit इसीलिए बोलते हैं. This is why I'm calling it single circuit. So blood passes through the fish heart once. And now someone answer this question. इतना तो मैंने बता दिया कि blood passes through the fish heart once. And अब जब heart से जो blood जाएगा, will that be oxygenated or deoxygenated? फेडरल वालों को भी यार आपस में बातें नहीं क्या करो. अच्छा ठीक है. Oxygenated blood passes through the heart. I don't think so. Deoxygenated. Exactly. Deoxygenated. देखो देखो ना. Listen. See. ये देखो. Gills हैं. मैं ये arrow हटा रही हूँ. बॉडी टिश्यूज से जो भी ब्लड कलेक्ट होता है, किसी भी सिस्टम में कलेक्ट होता है, तो बॉडी टिश्यूज के अंदर खूब सारा CO2 होता है, खूब सारा वेस्ट होता है, राइट? You give the body good stuff and it gives you bad stuff in return. It will give you blood that has no oxygen. It will give you blood that has no waste whatsoever, that has बहुत सारा waste, and उसमें कोई काम की चीज नहीं होगी. So body tissue से जो blood आएगा ना, वो हमेशा फालतू होगा. तो deoxygenated blood travels from the body to the heart. हार्ट से वो जाएगा टू द गिल्स फॉर ऑक्सीजनेशन. बट द प्रॉब्लम इज कि जो प्रॉब्लम तो नहीं है, द थिंग इज द की पॉइंट हियर इज कि गिल्स जब ऑक्सीजनेट कर देंगे उस ब्लड को, दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड विल नॉट गो बैक टू द हार्ट. इट इज गोइंग डायरेक्टली टू द बॉडी टिश्यूज. लेट मी शो यू द डायग्राम नाउ, द ऑफिशियल डायग्राम. ये सी, you can see here कि these are the body capillaries. So yeah, this is the body. Just know this. Body से blood जा रहा है to the heart. ठीक है? This blood has no oxygen. It is deoxygenated blood coming from the body. It goes to the heart. Heart से ये जा रहा है lungs में. Lungs में नहीं, gills में. Gills में oxygenation होगी. Oxygenation के बाद see, अब ये blood कहीं भी वापस जा रहा है heart के अंदर? नहीं जा रहा. The arrow is pointing in one direction. मतलब ये unidirectional है. ब्लड वापस नजर आ रहा है आते हुए हार्ट की तरफ. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं जा रहा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में नहीं जा रहा, गिल्स से हार्ट की तरफ ब्लड नहीं जा रहा. इट इज कमिंग डायरेक्टली टू द बॉडी. फिर जब बॉडी सारा उसको ऑक्सीजन यूज अप कर लेगी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर निकलेगा, देन इट विल गो टू द हार्ट एंड देन गो टू द गिल्स एंड देन कम बैक टू द बॉडी डायरेक्टली. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो यू शुड रिमेंबर, अगर कोई इस पे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि द ब्लड दैट इज passing through the fish heart, is this oxygenated or is it deoxygenated? So you should know, you should have this understanding कि this blood is deoxygenated. और अगर understanding नहीं हो रही है तो you can just learn this, especially the Sindh वाले लोग. Deoxygenated. ये वाली बात समझ आ गई guys? Okay, great, clear. So this is what I mean by single circuit. Now let's see कि यहाँ पे क्या लिखा है. अच्छा, when I give the notes to you, don't need to read all the text. ये diagram समझने की जरूरत नहीं है. This is just for understanding. Just read the highlighted portion. ठीक है? So fish have the simplest circulatory systems among the vertebrates. Blood flows unidirectionally. I've explained why unidirectionally. They have a single circuit, ये भी मैंने explain कर दिया. Two chambered heart है, ये भी मैंने बता दिया. Now in amphibians, reptiles, birds and mammals, the blood flow is directed in two circuits. One through the lungs, and back to the heart, which is called pulmonary circulation, and the other throughout the rest of the body and its organs, including the brain. Now let me show you this. अब डबल सर्कुलेशन में क्या है? वी हैव लंग्स, देन देयर इज द हार्ट एंड देन देयर इज द बॉडी टिश्यूज. बॉडी टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ गया,
Heart pumped the blood to the lungs, and then lungs से oxygenated blood will travel through the pulmonary which blood vessel? Now I'm going to test you. Sinus venosus. अच्छा वो फ्रॉग वाला. ओके आई एक्सप्लेन इट. ये पहले थोड़ा सा देख लो डबल सर्कुलेशन, फिर मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ. सो पल्मोनरी vein से the oxygenated blood comes to the heart from the lungs, and then the heart will pump it to the body. If you see this pathway, so the blood passes to the heart twice. See, body से heart से lungs, फिर दोबारा heart. ठीक है, twice. Oxygenated blood भी आएगा heart में और deoxygenated blood भी आएगा heart में. अब इस सर्किट को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्किट. ये पल्मोनरी सर्किट हो गया और ये सिस्टेमिक सर्किट हो गया. इन दोनों को अब बिकॉज देयर आर टू सर्किट्स, तो दिस इज डबल सर्कुलेशन, डबल सर्किट. This will be seen in amphibians, this will be seen in reptiles, this will be seen in birds and also in mammals. किसी ने साइनस वेनोसिस कहा था, देख लेते हैं साइनस वेनोसिस क्या लिखा हुआ है. ऐसा पे है, should be somewhere ऊपर. ये ना, ये this the blood system of a frog. ठीक है, अब उन्होंने okay. So in amphibians the heart is 3 chambered. There are 2 atria and there is 1 ventricle. इन्होंने लेबल किया हुआ है, दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एट्रियम. इन्होंने सेक्शन इस तरह से लिया हुआ है, जब भी डायग्राम बड़ा अजीब सा बना है. सो यू कैन सी द राइट एट्रियम इज कनेक्टेड विद द वेंट्रिकल इस तरह से. ये ब्लड फ्लो ट्रेस कर लेते हैं. एट्रिया में ब्लड आया, पल्मोनरी वेन, and then the vena cava, this is receiving deoxygenated blood from the body, then it travels to the ventricle. This part is the conus arteriosus. ठीक है, अब ये याद रख लो, conus arteriosus will send blood to the rest of the body of the frog. See, you can trace the blood flow. Vena cava से जो भी आएगा blood, that is obviously coming from the tissues. Tissue से deoxygenated blood आता है. ये आया, ये रहा ventricle. Ventricle बड़ा सा है, atria छोटे हैं. ठीक है, right atrium से deoxygenated blood आ रहा है from the tissues. It is pumped by the ventricle through this place. It is called the conus arteriosus. इसको ventral aorta भी लिखा हुआ है. Conus arteriosus का, it is simply going to send the blood to the rest of the body. इतनी चीज क्लियर हो गई. फिर ये sinus venosus. Sinus venosus is simply this portion, the part which receives deoxygenated blood from body tissues. बस ये रहा कोनस आर्टीरियोसिस का पर्पस ये हो गया, एंड ये साइनस वेनोसिस. I've explained it to you abhi foreignly, and I'll add it to the notes. And let's see. New page. So whoever asked me this, I hope their question has been cleared. ये समझ आ गया साइनस वेनोसिस वाली चीज. Just remember कि conus arteriosus is like the aorta. जैसे हमारे पास aorta होता है ना, उनके पास conus arteriosus होता है to send the blood to the rest of the body. फिर जैसे हमारे पास we have the vena cava. Is it important for MDCAT blood system of frog? You can go through it. If you're from Sindh, ना just like take one cursory look at it. मैंने थोड़ा explain कर दिया because हम ये cardiac cycle और ये चीजें तो सबको आती हैं, but ये जो extra थोड़ा बहुत portion होता है which can potentially cause trouble, तो मैंने I just took like 5 minutes to explain this. इसीलिए तो अगर क्लास में डिस्कस हो रहा है, just try to remember it. And I think that is done. अब हम human system पे आ जाते हैं because there's a lot, right?
So the human heart, इसका structure हमें पता है. We have two atria, we have two ventricles. The aorta sends blood to the entire body. We have atrioventricular walls, valves between the atria and the ventricles. Yeah, I think valves would be a better pronunciation. Valves हैं atria और ventricles के बीच में, the tricuspid valve and the bicuspid valve. फिर यहाँ भी valves हैं, semilunar valves in when the blood is traveling from the ventricles to the pulmonary trunk and the aortic trunk. So just heart, हमारे heart में key features क्या हैं? We have two atria, two ventricles, very muscular cardiac tissue, cardiac muscle है, cardiac muscle. फिर there are valves to prevent backflow. This is the basic structure. See, again, there are also three layers. The heart is composed of three layers. The epicardium, epicardium, the myocardium, and the endocardium. Okay, the inner wall of the heart has a lining called the endocardium. The inner lining is the endocardium. They've taken a cross section. You can see. The inner lining is the endocardium. This is the endocardium. And then you have the myocardium. Myo means muscle. So you can guess कि ये वो है, the contractile muscular part of the heart. Here you have something called the epicardium. And there is the pericardium. तो ये endocardium, basically ये epicardium वाली चीज को छोड़ दो, just remember, you can ignore this. Epicardium को छोड़ दो. Just know कि there is a space between endo and myocardium. Sorry, endo and the pericardium, not the myocardium, the pericardium. Endocardium and pericardium. And this space is called the pericardial cavity. And it contains pericardial fluid. Fluid ka purpose is simply to reduce friction when the heart beats. Reduce friction during beating. So yeah. So that is that. And then also the heart itself is supplied by coronary arteries and veins. So the coronary arteries will branch from the aorta. They're a branch from the aorta. They branch from the aorta and surround the outer surface of the heart like a crown. They diverge into capillaries where the heart muscle is supplied with oxygen before converging again into the coronary veins. So coronary arteries or veins ka purpose सिर्फ इतना होता है to take the good stuff to the heart and to take the waste away from the heart. And this is something ये जब हम disorders करेंगे अभी तो उसमें cover कर लेंगे cardiovascular diseases में. इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी को? Any objections? Space between the endocardium and the pericardium. Okay, I'd like to make it clear. मैंने लिख दिया है. See, space between endo and peri. This is correct. Okay, just remember this. Endo and peri. Clear? Any questions? I think not. Okay. Let's move on. I've discussed this. So the cardiac cycle. The heart will contract and relax in a rhythmic cycle. Okay? It is a cycle and it is rhythmic. Contraction and relaxation ka ek cycle hai. When it contracts, it pumps blood. When it relaxes, its chambers fill up with blood. Okay? जब वो contract करेगा, when the heart is relaxed, so blood will come in.
When it contracts, blood will be pushed out. So one complete sequence of pumping and filling is called the cardiac cycle. Let's see what that means. Now this is an important term. Contraction को systole बोलते हैं and relaxation को diastole बोलते हैं. Heart rate, stroke volume, इस पे आते हैं भी थोड़ी देर में. पहले देख लेते हैं. So when we start, okay, let's start with this. We start in a state where both the atria and the ventricles are relaxed. ठीक है, दोनों chambers relaxed हैं, no contraction whatsoever, both are relaxed, the entire heart is relaxed, और इस state को बोलते हैं diastole, atrial diastole, and बल्कि ये वाला diagram से start करना था. हाँ, ये यहाँ पे दोनों chambers relaxed हैं, atrial diastole and ventricular diastole दोनों रिलैक्स्ड है. तो इसको हम अब पूरा हार्ट ही रिलैक्स्ड है तो इसको बोलते हैं कार्डियक डायस्टोली. सही है. इस स्टेज में दोनों चेंबर्स रिलैक्स्ड हैं एंड व्हाट इज हैपनिंग इज कि ब्लड विल एंटर. द ब्लड विल एंटर थ्रू द एट्रिया. द राइट एट्रियम, दिस इज द राइट एट्रियम. द राइट एट्रियम इज रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द वेना cava, द इंफीरियर एंड द सुपीरियर एंड द इंफीरियर. सुपीरियर ऊपर वाला, इंफीरियर नीचे वाला. तो दोनों वेना cava से deoxygenated blood is coming into the atria. Atria से आया and then ventricles में भी आ गया. So the entire heart is basically receiving blood at this stage. सही है. Obviously अगर atria से ventricles में जाने तो कौन सी valve बंद, कौन सी valve खुली होनी चाहिए? This valve, the atrioventricular valve. These two valves they should be open. ठीक है. तो ये राइट में कौन सी होती है? राइट में होती है ट्राइकास्पिड एंड यहाँ पे होती है बाइकास्पिड. तो ये ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड शुड बी ओपन टू अलाउ ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द एट्रिया इनटू द वेंट्रिकल्स. अब ब्लड रिसीव कर रहे हैं, अब बहुत सारा ब्लड आ रहा है तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर जनरेट होगा. अब प्रेशर अगर होगा तो जब it can also happen कि the blood will start to flow backwards, and to prevent this the semilunar valves will be closed. So to start again, we अब cycle है ना, cycle में you need to pick one point and then study the entire cycle. तो जिस point को हम choose कर रहे हैं पढ़ने के लिए, it is a state where the entire heart is relaxed. ठीक है, atria भी relaxed है, ventricles भी relaxed है, blood अंदर आ रहा है, blood अंदर आ रहा है, and to prevent the blood from going back, the semilunar valves in the blood vessels are closed. इन blood vessels की जो valves हैं ये बंद हैं ताकि heart से blood वापस ना जाए. अभी ये सिर्फ receive कर रहे हैं. अब ये this phase you have to keep track of time as well. तो this phase lasts for 0.4 seconds. This is a long phase. You can see that half of the cardiac cycle for one half of the cardiac cycle the heart is actually relaxed, no contraction at all. 0.4 seconds के बाद you will have one contraction. Atria contract करेगा and the ventricles are relaxed. The atria will contract. And why will they contract? ताकि जो blood आहिस्ता आहिस्ता fill हो रहा था ना, अब जरा से उसको speed up करने के लिए contract कर दिया. Contraction से ये हुआ कि सारा blood ventricles में आ गया. अब ventricles में blood आते ही the atrioventricular valves will close to prevent blood from flowing back into the atria. ताकि ब्लड वापस एट्रिया में ना जाए, ये वाली वाल्व्स बंद हो जाएंगी. राइट. अब द वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एट दिस पॉइंट. एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल्स आर रिलैक्स्ड एंड द एवी वाल्व्स विल क्लोज. दिस इज अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ओनली 0.1 seconds. A brief period of atrial contraction, 0.1 seconds, and then it forces all the blood into the ventricles and the AV valves will close. बल्कि इस वक्त खुली है, हाँ यहाँ पे खुलेगी, सॉरी यहाँ पे बंद होंगी वाल्व्स. अब क्या होगा? अब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है और साथ साथ कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है. वेंट्रिकल्स विल कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रिया विल रिलैक्स. सो विल वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स हैव क्लोज्ड ताकि बैक फ्लो ना हो बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग प्रेशर. एंड वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड विल बी फोर्स्ड
into the pulmonary trunk from the, यहाँ से ये pulmonary trunk है और ये aortic trunk है. So blood will be forced into the blood vessels that are leading away from the heart. Semilunar valves, obviously they will be open ताकि blood flow करे. And this is a period that lasts for 0.3 seconds. So broadly speaking, you have 3 stages. एक stage में both the chambers are relaxed, the entire heart is relaxed, and it is receiving blood. In the next phase, atria contract and the ventricles are relaxed. ठीक है, ventricle contraction अभी तक हुई नहीं. Ventricles relaxed. And then in the next phase, the atria will relax and the ventricles will contract. तो 2 phases ऐसे हैं जहाँ पे एक contracted है, एक relaxed है, and then there is one phase, one half of the cycle where the entire heart is relaxed. इसमें किसी को कोई problem? Any difficulty in understanding any of this so far? सही. So I will go over this valves thing again. कि कौन से पॉइंट पे valves बंद हैं, कब ओपन है. See, जब दोनों chambers relaxed है ना in this first phase of the cycle, तो the semilunar valves are closed. Semilunar valves कौन सी हैं? Those valves that are present in the aortic trunk and in the pulmonary trunk. These semilunar valves are closed. ठीक है. फिर इस phase में भी semilunar valves are closed, लेकिन atrioventricular valves are open. ठीक है. जो AV valves हैं, they're open in the first 2 phases. ये यहाँ पे जाके बंद होंगी when the ventricles contract. And why would they close? So that there is no backflow into the atria. It would be nice if you can remember this time period कि 0.4 seconds के लिए दोनों chambers are relaxed and 0.1 seconds के लिए सिर्फ atria contract होते हैं, and for 0.3 seconds only the ventricles are contracted. It's like very basic, very easy to remember. So that's that. अब ये कर लेते हैं, heartbeats and heart sounds. So the rhythmic contractions of the chambers of the heart are known as heartbeats. One heartbeat lasts for 0.8 seconds. Now you can add that up. Because 0.4 seconds के लिए दोनों chambers relaxed थे, 0.1 seconds के लिए only the atria were contracted, and for 0.3 seconds the ventricles were contracted. So that means कि total time हमारा 0.8 seconds का होता है for a single heartbeat. A normal heart beats 72 times per minute at rest. This you should remember. The heartbeats produce audible sounds which are described as lub and dub. The first heart sound is lub. It is produced during ventricular systole. ये कौन सा phase हुआ? That phase जब ventricles contract, when the blood hits the closed AV valves. And the second heart sound is dub, and it is produced during ventricular diastole when the semilunar valves close and the blood strikes against the closed valves. ठीक है? Thus ventricular systole is lub and ventricular diastole is dub. ठीक है? इसका कोई mnemonic बना देते हैं. Systole is lub and diastole is dub. ठीक है? तो D से dub कर लो. Diastole dub, systole is lub. Yeah, ऐसे कर लो. SLD, systole lub and diastole dub. Oh wait, this can actually become solid. Yeah, you can use this to remember that ventricular systole is the lub sound and diastole is the dub sound, because you never know what they might ask in the exam. Achha, now there were these basic terms: heart rate, cardiac output, and stroke volume. Heart rate, though, it's simply the number of beats per minute. Stroke volume is the volume of blood that the ventricle pumps in one contraction, that the heart will pump in one contraction. The amount of blood pumped by a ventricle in a single contraction. तो ये जो फेज था ना कार्डियक साइकिल का, इधर
दिस थर्ड फेज, इसमें कितना ब्लड पुश आउट हो रहा है, यहां से कितना ब्लड निकल रहा है, दिस वुड बी योर स्ट्रोक वॉल्यूम. Next, we have cardiac output, which is the volume of blood that is pumped per minute, right? अब per contraction और per minute में फर्क है. Don't forget. This is per contraction. Stroke volume is per contraction. Cardiac output is per minute. सही है. अब 1 minute में कितनी contractions हो रही हैं? 72, right? So 1 contraction में अगर 72, 1 minute में अगर 72 contractions हो रही हैं, तो cardiac output जरा calculate करके देखते हैं. इसमें लिखा हुआ है कि stroke volume is approximately 70 milliliters. सही है. तो इससे अब थोड़ी calculation करते हैं. See, 1 minute में कितनी contractions हो रही हैं? 72. And एक contraction में कितना blood pump हो रहा है? 70. So if you do the maths, it would be 14, ठीक है, 5040 ml. Now that is roughly 5 liters. 5 liters is the volume of blood जो normally कहा जाता है, volume of blood in the entire body. And if you want a formula, I can give you a formula as well. मुझे space चाहिए, यहाँ कर लेते हैं. तो cardiac output is equal to stroke volume multiplied by the heart rate. If you want, so you can use this, you can remember this, वरना you can just remember कि stroke volume क्या होता है और cardiac output क्या होता है, तब भी you will be able to derive this. Is that clear? What are you saying no to, Atif Hassan? ठीक है, सही है. So we have like 30 more minutes. I think we will be able to get a lot done. So, अभी हमारा एक मेजर थोड़ा सा ये रहता है important, maintaining the heart's rhythmic beat. सही है. So in vertebrates, अब हमने cardiac muscle पढ़ा था, and cardiac muscle is supposed to be self-stimulated. In vertebrates, the heartbeat originates in the heart itself. ठीक है. हार्ट के पास अब जितना स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल के पास जब तक नर्व इम्पल्स नहीं आएगी फ्रॉम लेट्स से द स्पाइनल कॉर्ड, तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा. बट द हार्ट इज कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन इट्स ओन, एंड देयर आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंट्स डन इन लैब्स कि वो थोड़ा सा कार्डियक टिश्यू लेके उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट्स और दे गिव इट द राइट एनवायरनमेंट इन अ लैब, एंड देन दे सी दैट द हार्ट बीट्स. The heart is beating on its own. उसको कोई external उसकी ज़रूरत नहीं है stimulus की in order to contract. So the stimulus comes from within the heart itself. And this stimulus comes from a group of cells called the sinoatrial node. It is a group of autorhythmic cells located in the wall of the right atrium near the place where the superior vena cava enters the heart. Remember this location. It is, in simpler words, you can say upper part of right atrium. Upper right atrium, and it sets the rate and timing at which all the cardiac muscles contract. If there is a set rate and timing, तो इसका मतलब है कि it is rhythmic. Okay, this is what we mean by rhythmic. There is a fixed rate, fixed number of contractions, और हर contraction कितना time लेगी वो भी fixed है. और ये कौन fix करता है कि sinoatrial node decide करता है. Impulses from the SA node first spread rapidly. Now I'll come to the diagram. Control of heart rhythm. Electrical signals follow a set path through the heart in establishing the heart rhythm. Okay? So, let's see. So, this is the SA node.
एक पार्ट है SA नोड, दिस इज द SA नोड एंड दिस इज द AV नोड. जैसे साइनोएट्रियल नोड है वैसे एक एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है. So sinoatrial node is called the pacemaker. Why? Because it determines the pace. Pace का क्या मतलब है? Number of contractions and how long each contraction should last. That is the pace or the rhythm. So sinoatrial node से signal originate होगा. Then that signal will spread throughout the atria. Now it will spread throughout the atria because all of the atria is basically cardiac muscle. All of that is cardiac muscle. So electrical impulse will travel throughout the cardiac tissue and the atria will contract. The electrical signal will then reach a portion of the atrium called the AV node. तो जैसे SA node था वहीं right atrium में AV node है, but it is located a little below the SA node. AV node के पास अब impulse आएगी. Electrical impulse will reach the AV node. AV node में the impulse will be delayed for a certain duration. It will stop. AV node उसको आगे ट्रांसमिट नहीं करेगा, वो अपने पास 0.15 सेकेंड्स के लिए रोक के रखेगा. फिर उस डिले के बाद द इम्पल्स विल ट्रैवल अलोंग दीज ब्रांचेस, दिस टिश्यू. ठीक है, दीज आर कॉल्ड बंडल ब्रांचेस. ये बंडल ऑफ हिस, थिंक बंडल ऑफ हिस इसमें लेबल्ड नहीं है. ठीक है, बंडल ऑफ हिस. I think Hiss was the name of the person who discovered. तो bundle of Hiss and then bundle branches. ठीक है, branches निकल रही हैं इस bundle से, वो इन ventricles की तरफ जा रही हैं. ठीक है, ये ventricles में ये branches हैं and the impulse will travel. AV node से signal आया, ये branches के पास जाएगा and then the ventricles will also contract. They're also पहले bundle branches के पास जाएगा signal and then the bundle branches will transmit to more fibers called the Purkinje fibers. ठीक है, ये label हुए हैं. So you can see bundle branches and Purkinje fibers. So to start again, SA node में signal generate हुआ, signal गया AV node तक. AV node ने अपने पास 0.15 seconds के लिए रोक के रखा, during which time the atria were contracting. And then AV node will send the signal along the bundle of His and the bundle branches and the Purkinje fibers, and the ventricles will also contract. ठीक है, अब ये जो electrical activity है ना, this electrical activity can actually be measured, and it is measured and recorded in a form known as the ECG or the electrocardiogram. Electrocardiography में होता यह है कि हम जो ECG, if you are familiar with it, so it's just a method in which the electrodes are placed on the skin and currents are recorded. Basically ये जो electrical activity है ना, थोड़ी थोड़ी electrical activity हमारी skin पे भी feel होती है. हमें तो feel नहीं होती, but it is, some of these signals can be picked up. ठीक है, and it can be picked up by this machine. And what the machine will do is कि ये currents को record करेगी and it will give us a graph. It will give us something like this. हमें ये नजर आएगा. This is called the electrocardiogram. अब इस electrocardiogram को physicians use करते हैं to interpret the heart's activity. अगर उनको सब चीज़ normal नजर आती है तो they can say okay the ECG is normal. लेकिन अगर कहीं भी abnormality है anywhere in the heart tissue, anywhere in this signal transmission, so the ECG will pick it up and the physician will be able to make a diagnosis. अभी I think federal में बहुत दिया हुआ है Q waves, R wave, पता नहीं कौन से S waves and all of that. तो that I'm not going to teach because वो फिर बहुत ज़्यादा advanced हो जाएगा for a lot of people and they're not going to ask you that stuff. मैंने past papers किए थे last year and I never saw कि वो questions repeat हो रहे हो बार बार या आ रहे हो इतना frequently. It is given in the book but it's not asked that much. So keep doing the past papers. Past papers से पता चलता है कि what is high yield and what is not because syllabus बहुत extensive है, especially for the federal kids.
सिंध और पंजाब तो कर लें क्योंकि इतना नहीं है इशू, बट फेडरल में देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन. सो दैट इज क्लियर आई थिंक. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? Were you able to understand the entire cardiac cycle and the SA node and the AV node, the signal transmission? I hope revision अच्छा हो गया होगा इसमें. ठीक है. So now what we can do is, मुझे इसके बाद I have to give you an overview of the lymphatic system. So अभी तक we've just seen what is happening at the level of the heart. Heart ने blood pump कर लिया and heart has pushed out the blood to the body. अब उसके बाद what happens is कि ये डायग्राम में मेरे पास सही है. So we know कि the aorta is like one. Aorta is the vessel जो सारा ब्लड लेके जा रहा है हार्ट से. लेकिन एओर्टा के ऑब्वियसली ब्रांचेस होंगी डिफरेंट ऑर्गन्स में जाके वो डिफरेंट आर्टरीज सेंड करेगा. ठीक है. अब आर्टरीज विल बिकम कैपिलरीज and then the capillaries will join to form a vein, and then you have the heart. ठीक है. तो जब टिश्यू के अंदर जाएंगे, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द टिश्यूज के अंदर देयर इज अ कैपिलरी नेटवर्क. बस डायग्राम नहीं लाई मैं. ठीक है. ऐसे ऐसे नेटवर्क होगा, कैपिलरी नेटवर्क होगा. तो arteries will give off branches. You will have a capillary bed and you will have a vein forming. This is how arteries, veins and capillaries are connected. I think you all know this. So yeah. So now let's see what is happening at a single capillary. This is called, अब इन्होंने लिखा हुआ arterial end of the capillary. It has a name. It is called an arteriole. ठीक है. Now this is a capillary और यहाँ पे deoxygenated blood आया है. Oxygen rich blood, glucose rich blood, मतलब सारा all this material that the cell basically needs वो यहाँ पे है. और ये हमारे टिश्यू सेल्स हैं. These are body cells. These are cells. ये हमारा टिश्यू है. So यहाँ पे होगा बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. ठीक है. होना यहाँ पे है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल. Now what happens is कि रेड ब्लड सेल्स भी हैं. रेड ब्लड सेल्स तो ऑब्वियसली निकल के नहीं बाहर आ जाएंगे, लेकिन बहुत सारा लिक्विड बाहर निकल के आ जाएगा. ठीक है. अ लॉट ऑफ फ्लूइड विल कम आउट. फ्लूइड विल एग्जिट फ्रॉम द कैपिलरी. इस फ्लूइड को बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड और या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड. ये कौन सा फ्लूइड है? has come out from capillaries. अब इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी है, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर ग्लूकोज भी है, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर अमीनो एसिड्स भी हैं, इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर आयंस भी होंगे काफ़ी सारे. मतलब एवरीथिंग दैट द सेल बेसिकली वांट्स और जो सॉल्युबल चीज़ें होंगी वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व्ड होंगी. इंटरस्टिशियल द सेल्स आर बेस्ड इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड. ठीक है. मतलब देयर इट्स the cells are washed in interstitial fluid. Interstitial fluid हमेशा present होता है. Interstitial fluid के through, it is like the medium through which these substances will enter the cell. अब the thing is कि fluid निकल रहा है, but इस fluid को वापस भी जाना पड़ेगा क्योंकि like it has to be returned to the blood as well in order to maintain normal pressure. There has to be a balance between the fluid that leaves the capillaries. I'll write it down. There has to be a balance between the volume of fluid that leaves the capillaries ठीक है. अगर बहुत सारा फ्लूइड निकल जाएगा कैपिलरी से और वो फिर वापस ब्लड वेसल्स को नहीं मिलेगा, अगर आपके ब्लड में वो वापस नहीं जाएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम, राइट? और ब्लड विल बिकम लाइक थिकर एंड मोर विस्कस एंड मोर कॉन्सेंट्रेटेड
and which will obviously make it difficult for the blood to travel along the circulatory system. Okay, it has to remain at a certain level of concentration, उसमें एक certain level of fluid होना चाहिए, and इसको return करने के लिए we have a system called the lymphatic system. सही है? So let's see the description. The lymphatic system is a system of blind vessels. Now, why is it blind? क्योंकि यहाँ पे it's like heart में एक cycle है ना blood circulation में, heart से जा रहा है body, heart से lungs में भी जा रहा है, ठीक है, body से वापस heart में आ रहा है. So there's like a proper circuit. यहाँ पे कोई circuit नहीं है. ये vessels क्या करेंगे? These vessels will drain. Lymphatic vessels will drain into blood vessels. ये वापस return कर देंगे, ये veins को return कर देंगे. ठीक है, जो फ्लूइड वहां पे लॉस्ट हो गया था ना, इट्स लाइक अ लॉस्ट एंड फाउंड सिस्टम. जैसे आपने एक चीज अपनी ड्रॉप कर दी एंड देन किसी और चलते फिरते इंसान को आपका आईडी कार्ड मिल गया और उसने फिर वापस कर दिया आपको. इट्स लाइक दैट. तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वाज लॉस्ट. जो फ्लूइड कैपिलरीज ने लूज किया ना ब्लड में से एट द टिश्यूज, that fluid is basically picked up by the lymphatic system and returned to the blood at the veins. Does that make sense? It's like your lost and found system of the blood. So इसके components हैं, जैसे blood circulatory system है वैसे ही lymphatic system भी है. Blood circulatory system में we had the heart, we had like the heart is the pumping organ, we had the blood vessels. So likewise we have lymph vessels, और lymph vessels को lymphatics भी कहते हैं. ठीक है, we have lymph capillaries, blood vessels होती हैं तो lymph capillaries भी होती हैं. Lymph nodes होते हैं और lymphocytes होते हैं. Lymph nodes and lymphocytes, these are different. ये जरा न्यू चीज है, ये blood vessels में इस तरह का कुछ नहीं था. Colorless fluid called lymph, a network of blind ducts called lymph vessels, lymph capillaries. I'll come to this. Patches of lymphatic tissue, इस पे आएंगे बाद में. These structures are considered as part of lymphatic system. ठीक है, I'll discuss this in a bit. पहले एक overview ले लेते हैं basic. So you have lymph, and lymph is colorless. Why is it colorless? Again, no pigments, no hemoglobin. Derived from tissue fluid and interstitial fluid, ये मैंने explain किया. About 85% of the tissue fluid re-enters the blood capillaries from tissues. The remaining 15%, ये वो 15% है, ठीक है, वो सारा टिश्यू फ्लूइड नहीं उठाता लिम्फ, सिर्फ 15% उठाता है. 85% तो वापस ही आ जाएगा, 85% वापस डिफ्यूजन से आ जाएगा. It returns itself by diffusion. ठीक है, this is picked up by the lymphatic capillaries, picked up by lymph. अच्छा, अब लिम्फ में सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड नहीं है, लिम्फ में बहुत सारी चीजें हैं. सो लेट मी, सो देयर इज वाटर, देयर इज सॉल्यूट्स, देयर आर स्मॉल प्रोटीन्स. बेसिकली इतना भी नहीं लिखते. लिम्फ इज बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड प्लस lymphocytes. Now what are lymphocytes? ये अभी जब मैं blood discuss करूंगी तो you will get to know. Tissue fluid plus lymphocytes is called lymph. Tissue fluid में क्या होगा? Obviously tissue fluid में water भी होगा, solutes भी होंगे, थोड़े बहुत छोटे small proteins भी होंगे जो चलते फिरते निकल के आ गए capillaries में से. So that is all tissue fluid. Tissue fluid and lymphocytes is lymph. Then you have lymph vessels. Now, they're formed by the union of tiny lymph capillaries present in all organs of the body except the nervous system. Now, this is nice. You should know that the nervous system does not have any lymphatic tissue whatsoever. Nervous system has no lymphatic vessels. Okay?
अच्छा, the lymph vessels resemble veins. They're a lot like veins. They contain internal valves. क्यों? क्योंकि इनमें blood flow, lymph flow बहुत slowly होता है ना, slow होता है इसलिए. Because flow is very slow and that rhymes. Lymphatic system has no central pump, and the lymph circulates through lymph vessels by the contraction of the surrounding skeletal muscles. जब हमारे skeletal muscles contract करते हैं तो they exert some pressure on the lymphatic vessels. उस pressure की वजह से lymph circulate करता है. All the lymph vessels of the body finally join to form two large conducting ducts, which drain the lymph in two large veins present in the lower neck region. अब सिंध में बहुत जनरल टर्म्स में दिया हुआ है ना, टू लार्ज ड्रेन्स, टू लार्ज डक्ट्स. पंजाब एंड फेडरल पीपल, आई वांट यू टू ओपन योर बुक्स एंड सी के एग्जैक्टली कौन सा रीजन है, कौन सी वेन है. सो यू आर गोइंग टू, इसकी जो स्पेसिफिक्स है ना वो आप चेक कर लें एंड राइट इट डाउन along with your notes somewhere. The lymph nodes are specialized round or oval structures that lie along the lymphatic vessels. Ab lymphatic vessels, I should have a diagram for this. Just give me like 2 minutes. Let me find a diagram. I'm sure there is one somewhere. यहीं पे होगा, यहीं पे होगा, यहीं पे होगा. Let's see. ये रहा, मिल गया diagram. See, ये lymphatic vessels हैं हमारे सारे, ठीक है? You can see the supply of the lymph. मैं इसको ना कॉपी करके वहाँ ले आती हूँ, वरना ये मुझसे लूज हो जाएगा. We just need the diagram. Forget the rest. Just a minute. Let me copy it. So these are all the lymphatic vessels. And I said कि lymph nodes जो होते हैं, they are lymphatic tissue. They are small organs, छोटे छोटे. You can see they're oval, they're circular. हर जगह lymph nodes हैं. कितनी सारी जगहों पे lymph nodes हैं. See, हर region में lymph nodes हैं. So lymphatic vessels हैं यहाँ पे. They're associated closely with the veins. क्यों? क्योंकि इनको fluid veins को return करना है. ठीक है? You have these lymph nodes along the lymphatic vessels. I hope that makes sense. अच्छा, अब वो जो जगह है ना in the lower region of the neck, ये देख लो, right lymphatic duct and thoracic duct. So Punjab and Federal kids, आप बुक ना खोलें तो आपका काम चल जाएगा. There is the right lymphatic duct and the thoracic duct. You can see जहाँ पे lymph वापस drain हो रहा है. So don't learn this diagram at all, okay? I just wanted to show you, okay, how the lymph nodes are distributed. So each lymph node consists of an outer fibrous capsule. अब ये छोड़ दो. Purpose simply है, they act as filters and remove bacteria and other harmful material. अब इसमें ऐसा है क्या? Lymph nodes के अंदर ऐसा है क्या? How are they acting as filters? They have a certain structure. ठीक है? Lymph nodes के अंदर you have lymphocytes. Lymphocytes are immune cells. ठीक है? Lymphocytes are immune cells. Specifically, there are B cells and there are T cells. अभी हम immunity पढ़ेंगे तो clear हो जाएगा. And they're basically, you know, soldiers that are patrolling the entire system. ये hunt पे लगे रहते हैं कि हमें कोई मिल जाए, कोई pathogen मिल जाए, कोई खराब चीज मिल जाए जिसको हम destroy करते हैं. That's all they do. This is how they're acting as filters. They remove bacteria and other harmful material. Now, there is a reason why our lymph nodes get swollen when we get an infection. या जब बहुत सारे लोगों को कोई कैंसर डायग्नोज होता है तो lymph nodes
play a very important role. Because if something wrong is going on in the body, तो lymph nodes के अंदर बहुत सारे pathogens accumulate हो रहे होंगे, जो lymphocytes होंगे they're very active. अब जहाँ पे बहुत सारा actively काम हो रहा है, तो इसीलिए you will see that the lymph nodes will swell up. They swell up when there's basically an infection or any other disease state or something. So that is that. And अभी तक किसी को कोई problem lymphatic system में समझने में about lymph nodes or the purpose of lymph capillaries or whatever, what lymph is supposed to do? Any issues so far? ठीक है, let's continue. So the function of the lymphatic system, there are three main functions. One function is the drainage of tissue fluid. वही काम, उसका असल पर्पस क्या था कि भाई tissue fluid वापस कर दो blood को, blood का बड़ा नुकसान हो जाएगा. Then you have absorption and transport of fats, and then you have defense of the body. This defense wala function is done by the lymph nodes. Absorption and transport of fats, ये digestion वाले chapter में you must have studied कि the villi of the small intestine contain tiny lymph capillaries called the lacteal, which absorb fats and then transports it to the bloodstream. These are the three main functions. Now you can go through this diagram. Don't learn this diagram, ठीक है? It was just for like class purposes. कोई फायदा नहीं होगा ये diagram पढ़ने का, मैं पहले बता रही हूँ. अच्छा, now there is a condition called edema. अब मैंने बताया था ना कि there has to be a balance. जब ये balance disturb होता है ना, तो this is one condition that can happen. Accumulation of excessive fluid in the tissues. Now why would that happen? Because more tissue is produced than can be drained. More tissue fluid is exiting the capillaries. A lot of fluid exits capillaries. Okay, the capacity for drainage is exhausted. इतना मतलब वो वापस नहीं जा रहा ब्लड में जितना कि ब्लड से बाहर निकल रहा है, simply. So fluid leaving is greater than the fluid returning. आई एम द सॉर्ट ऑफ पर्सन जो इस तरह के छोटे छोटे स्टेटमेंट से जिसको कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर होता है ना कि फ्लूइड लीविंग इज ग्रेटर देन फ्लूइड रिटर्निंग, तो मुझे इस तरह से चीज़ें होती, तो मैं पढ़ा भी इसी तरह रही हूँ. अब वाई इज दिस हैपनिंग? इसके रीजंस हैं. इसका एक रीज़न ये है डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी प्रोटीन्स. व्हेन वी कंज्यूम प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स का बहुत सारे फंक्शंस हैं. एक पर्पस तो ये कि मसल्स बनाता है, बोन्स बनाता है, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं. देयर आर प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ब्लड प्रोटीन्स भी कैसे बनेंगे? व्हेन यू आर ईटिंग इनफ प्रोटीन इन द फर्स्ट प्लेस, ठीक है? तो देयर आर ब्लड प्रोटीन्स जिनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, एंड वन फंक्शन ऑफ दिस ब्लड प्रोटीन इज टू मेंटेन द osmotic balance of blood. Okay, and how they do this you do not need to know. Just know कि blood proteins are essential to maintain the osmotic balance of blood. इनकी ज़रूरत है हमें. ब्लड को ठीक रखने के लिए ब्लड प्रोटीन्स की ज़रूरत है. जब डाइटरी प्रोटीन्स नहीं होते तो ब्लड अपने ब्लड प्रोटीन्स को भी कंज्यूम करना शुरू हो जाएगा. एज अ रिजल्ट, osmotic potential of the blood is reduced. Osmotic potential. Can someone tell me the exact term that means the same thing as osmotic potential? Exact term. Abhi maine padhaya hai at the beginning of the class. If you have been paying attention, you will be able to answer. Osmotic potential ka synonym kya tha? Yes, Fezavins again. So osmotic potential, solute potential, they all mean the same thing. Osmotic potential of the blood will decrease if these blood proteins are also consumed. ठीक है? अब osmotic potential of the blood is reduced का मतलब ये कि the blood has become very thin. Blood is very fluid, very loose. उसकी viscosity कम हो गई, उसकी thickness कम हो गई है blood की. ठीक है? अब blood पानी है. तो blood में जब बहुत सारा पानी है, तो obviously that fluid is going to be drained into the tissues. ठीक है? वो टिश्यूज में जाएगा, टिश्यू फ्लूइड के फॉर्म में एग्जिट होगा.
the blood capillaries cannot take in the excess fluid. वो टिश्यू फ्लूइड ब्लड कैपिलरीज वापस नहीं ले सकती इतना सारा, लीडिंग टू इट्स accumulation causing edema. It will be seen as a swelling. Blood tissue जो हमारे body tissues होंगे, they will be seen as a swelling. Like the hands will swell up, the feet will swell up, different parts of the body you would see a swelling, and that is edema. अब उसी का एक रीजन तो ये हो गया deficiency of dietary protein. Now it happens in conditions of malnutrition when you're not eating enough. जिन लोगों के पास enough खाना नहीं है, प्रोटीन नहीं है खाने के लिए, तो edema उनमें नजर आता है. Then you have lymphatic obstruction. अब अगर lymph vessels block हो जाएंगे तो क्या lymph vessels अपना काम कर सकेंगे? Obviously not. तो their purpose is to return tissue fluid to the veins, and if the lymph vessels themselves are blocked, they cannot do that function, and that would result in edema as well. And the common cause of blockage is filariasis, an infection by the nematode filarial worm. ये animal kingdom में पढ़ते हैं कि जितने round worms हैं, basically these are all round worms. So one type of round worm called the filarial worm, उससे एक infection हो जाता है. And I've told you कि whenever there is an infection, the lymphatic system becomes very active. Lymph nodes become swollen. लेकिन in this particular infection, lymph vessels भी blocked हो जाते हैं. Lymph vessels blocked हो जाते हैं, तो tissue fluid accumulate होता है, again edema. Allergies and burns में भी होता है. So basically, whenever allergies and burns occur, the local blood capillaries will become very permeable and leaky. इसका मतलब ये हुआ कि they allow a lot of fluid to exit. जब वो बहुत सारा फ्लूइड निकलने देंगी तो ऑब्वियसली टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो एलर्जीज में, बर्न विक्टिम्स में भी यू विल बी एबल टू सी एडीमा. तो दैट वाज एडीमा. क्या था नेक्स्ट? ये डायग्राम मैंने क्यों डाला था? जस्ट फॉर लाइक greater reinforcement, you can go through it. अच्छा, now we're almost done. 5 minutes सिर्फ ब्लड पे थोड़ा स्पेंड कर लेते हैं ताकि कल जब मैं इम्यूनिटी स्टार्ट करूं तो you will have some background information. Just take like 5 minutes to cover blood. Is that all right with everyone? ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है? फिर हमारे पास सिर्फ एक छोटू सब टॉपिक रह जाएगा. एंड tomorrow we'll be covering immunity. Tomorrow we'll also be covering nutrition and gaseous exchange. तो ये जो 3 essential chapters है ना, ये थोड़े से ये काफ़ी कवर हो जाएंगे. फिर हमारे पास पूरे सिलेबस से सिर्फ वो रह जाएगा, किंगडम्स रह जाएंगे. So that would be the end. So blood is a connective tissue, and I've talked a lot about how there are 4 types of connective tissue. 4 types of essential tissue: epithelial, connective, muscular. So blood is connective. And although हमें लगता है कि blood fluid है, लेकिन blood is actually a tissue क्योंकि blood में बहुत सारे cells हैं. A group of cells performing a similar function is a tissue. Hence, tissue. So it is red, it is viscous, it is fluid. Now blood has 2 parts, 2 components: plasma plus cells. Plasma is fluid and cells are obviously like solid. So blood is the fluid part of the blood. It is non-living because no cells, and makes up about 55%. Now remember the percentage. It is made up of 90% water, 10% dissolved substances. It contains inorganic salts, and it also contains plasma proteins. The plasma proteins are like colloids. Plasma proteins, ये वही plasma proteins हैं जिनकी अगर कमी हो जाए, then it will result in edema. The plasma also contains substances which are transported by blood, such as nutrients, waste, hormones, enzymes, etc. Okay, that's like a basic overview. You can remember this. Albumins होते हैं, globulins होते हैं, fibrinogen. These are plasma proteins. You can remember their names. Okay. So, अच्छा, now there are some terms that I want you to differentiate between. ठीक है? अब अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हैं, ठीक है, you take a test tube and in that test tube you were to collect some blood, और उस blood को आप छोड़ दें, you add nothing to it whatsoever, और आप उस blood को सिर्फ छोड़ दें for some time, like let's say for an hour or so. तो
तो यू विल सी कि वो जो ब्लड है ना वो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा. यू विल सी this red component and you will see a clear colored white component. तो ये जो red component है ना, that is simply your erythrocytes, red blood cells. एक बीच में एक छोटी सी लेयर होती है, यहाँ पे platelets हैं और ये बाकी सारे white blood cells हैं. तो that again tells you कि blood is not just one thing, it is blood में बहुत सारा material है. So these are the separated blood cells. Now there is one thing called plasma and there is one thing called serum. Has anyone heard of serum before in this context? Like, suna hoga. So plasma is the fluid portion, we know. Okay? Fluid. It is water plus dissolved stuff. अब serum क्या है? Serum is plasma that does not have clotting factors. Just remember this, कि plasma that does not have clotting factors. Clotting factors are basically proteins that are needed for clotting. That is just something I wanted you to know. Oh wait, क्या हुआ? I'll delete this. ठीक है? So now let's come to the types of blood cells. 3 types. Red blood cells. Platelets are not actually cells, they are fragments of cells. Not cells, but cell fragments. Then you have white blood cells. Okay? Red blood cells they have a certain structure. Let me draw a white blood cell. Okay? They are flattened, they are biconcave. मतलब अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन लें, इसको काटें और इसको आगे से व्यू करें, तो this is what a red blood cell will look like in this view. So अब रेड ब्लड सेल्स का क्या नंबर है कि सब वेट लेट मी शो यू द नोट्स दैट आई विल बी गिविंग यू. ये शुरू में सी अब ये इंफॉर्मेशन दी हुई है ना. नाउ दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द पंजाब बुक. ठीक है, ये स्पेशली द पंजाब एंड फेडरल किड्स, इफ यू कैन रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन इट वुड बी नाइस. कितना एंड कितना डायमीटर, ये सब. सो इट वुड बी नाइस इफ यू कैन डू दिस. मैं ये फैक्ट्स मैं क्लास में नहीं कवर करा सकती. So there is a certain number. Red blood cells का number different होता है in males and in females, and their function is basically oxygen transport and carbon dioxide transport. Then platelets का भी एक certain range होनी चाहिए body में, 150,000 से 400,000. ये numbers वैसे ना भी याद करें तो it's fine. This is you shouldn't पूछना तो नहीं चाहिए, बुरी बात होगी एग्जाम में का पूछना ये. But if you can, you should. Platelets are required for clotting, and white blood cells, they are immune cells. Immune cells, ये सारे immune cells हैं. White blood cells होते ही immune cells हैं. ठीक है? So red blood cells का function पता है, to transport oxygen. How do they transport oxygen? They have a pigment called hemoglobin. Hemoglobin carries oxygen. It is the oxygen carrier. And blood also transports carbon dioxide. So basically exchange of gases, gaseous transport के लिए. ये हम कल करेंगे. So white blood cells की जो types है ना, granulocytes, agranulocytes, ये मैं करा देती हूँ जल्दी से, and then we'll end. So white blood cells के types होते हैं. White blood cells can be
granulocytes or they can be agranulocytes. A means without. So agranulocytes are without granules and they have granules. Let me, this will make sense in a while. Wait. So there are some cells. Okay, I'll just show you a diagram. It will be faster. See, look at these cells. Some of these cells look very uh, granular. ये जो छोटे छोटे dots बने हुए, these are granules. सही है. ये granules किस किस में? ये basophils में, ये eosinophils में है और ये neutrophils में है. And monocytes में भी है granules. नजर आ रहे हैं थोड़े. So there are granulocytes and there are agranulocytes. We will take you through the. Right. They have granular cytoplasm, granules, and they have a lobed nucleus. Lobed nucleus, lobes भी, again, let me take you to the diagram. See, lobed nucleus. ये हम nucleus कैसे देखते हैं? Typically one circular structure. लेकिन यहाँ पे nucleus के कितने different shapes हैं. इसमें 3 lobes नजर आ रही हैं, इसमें 2 lobes नजर आ रही हैं, इसमें भी 2 lobes नजर आ रही हैं. तो the nucleus is lobed. And इनको बोलते हैं because of the difference इनका, इसकी वजह से they are also called polymorphonuclear. Poly, many, morph, shape. So because of the appearance of the nucleus, there are different, मतलब इनकी lobes हैं. Basically, the nucleus looks different in each cell type. And then there are agranulocytes. इनमें कोई granules नहीं होते. The cytoplasm is very smooth, very clear, and they have a non-lobed nucleus. And इनमें सिर्फ monocytes होते हैं और lymphocytes होते हैं. Monocytes, when they mature, they become macrophages. These are also immune cells. अब इसको ना granulocytes और agranulocytes को याद करने का एक तरीका है. And if you've watched Ben 10 as a cartoon, तो Ben's grandpa, right? He's a very central character in Ben 10. तो gran से याद रख लो granulocyte. सही है. B से हो गए basophils. E से हो गए eosinophils. Now this is something that I came up with myself. ये मैंने खुद बनाया. मैंने last year MCAT के लिए भी मैंने ऐसे ही याद किया था. And it still helps me remember to this day. We had an entire blood module abhi, from April to June, and this simple mnemonic, it like helped me so much remember so many things. So basophils, eosinophils and neutrophils, these are granulocytes. ठीक है. और जो बच गए, कौन बच गया? Lymphocytes बच गए, monocytes बच गए. These are agranulocytes. बस that is that. And इनके functions बस जल्दी से skim कर लेते हैं and we'll be done. आ गया वो page. Where is that diagram? Okay, let me take you to the notes only. ये देख लो functions. Neutrophils are phagocytes. They do phagocytosis, and we know what phagocytosis is. The cell simply eats, the cell engulfs, the cells will engulf pathogens या invaders. ठीक है. कुछ भी अगर उसको फॉरेन गंदी चीज नजर आई तो वो उसको खा जाएगा. That is phagocytosis. And neutrophils are phagocytes. Eosinophils, let me erase this part.
eosinophils क्या करते हैं? They are important in allergic responses. Allergies जब होती हैं, when people have, let's say, a dust allergies, and also जब वो flatworms, parasitic worms होते हैं ना, जितने parasitic worms, वो जो liver fluke पड़ा था उसमें, animal kingdom में liver fluke, और अभी ये filarial worm, तो इस तरह के worms के against जो immune response होता है, that is done by eosinophils. So they release compounds basically that will help in their immune response. ठीक है, just remember allergies and flatworms ये associated है eosinophils के साथ. Basophils are also required. अब ये छोड़ दो, ठीक है. Inflammation, basophils का काम है inflammation. ठीक है, ignore this. Inflammation. Lymphocytes and monocytes. अब monocytes become macrophages. ठीक है, and macrophages are also phagocytes. ठीक है, न्यूट्रोफिल्स फेगोसाइट्स हैं और मैक्रोफेजेस भी फेगोसाइट्स हैं. ये होते हैं हमारे टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स. बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल्स कुछ टी सेल्स विल आल्सो ब्रिंग अबाउट अ सॉर्ट ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स व्हिच वी विल स्टडी टुमारो. एंड दिस इज ब्लड. ये मैंने ब्लड सेल्स इसलिए बता दिया बिकॉज हम डायरेक्टली इम्यूनिटी से इसको जब लिंक करेंगे तो इम्यून सिस्टम ज़रा बेटर समझ आएगा. अगर मैं ब्लड पहले पढ़ा देती और फिर सर्कुलेशन पढ़ाती तो फिर वो एक अजीब सा फ्लो बनता है. सो दैट इज इट. लेट मी नो इफ ऑल ऑफ दिस वाज क्लियर. इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस देन आई एंड द मीटिंग. सीरम हेपेटाइटिस बी को भी बोलते हैं. व्हाई? सीरम हेपेटाइटिस बी को बोलते हैं लाइक दैट जो सीरम मैंने अभी बताया है. लेट मी रिसर्च दिस अ लिटिल. आई थिंक यू माइट हैव समथिंग, कोई मिसकंसेप्शन होगा इसमें आपका. send me a WhatsApp text. डाइजेशन, हाँ ना, वो न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में कल कवर हो जाएगा ना. ठीक है. कैन यू रिपीट eosinophil? श्योर. Look, eosinophils are also cells. ठीक है, ये granulocytes हैं. I gave you an entire mnemonic to remember this. Ben 10 वाला. तो eosinophil are responsible for the immune response against allergies and parasitic worms. लोगों को डस्ट एलर्जी हो जाती है, पॉलन से एलर्जी हो जाती है. ठीक है, एक तो ये बात एलर्जिक रिस्पॉन्स. एंड ऑल्सो जो पैरासिटिक वर्म इन्फेक्शन हो जाते हैं लाइक द राउंड वर्म्स एंड द फ्लैट वर्म्स, लिवर फ्लूक अगर पड़ा होगा एनिमल किंगडम में, या जो फिलेरियल वर्म है, आई एम श्योर यू आर ऑल फेमिलियर विद दिस. तो ये वर्म इन्फेक्शंस एंड एलर्जीज, इनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स है दैट इज ब्रॉट अबाउट बाय eosinophils. Now you should know that all white blood cells are basically immune cells. इनका काम ही यही है, to defend. ठीक है, बस. Now we'll take this up tomorrow. अच्छा, वो वेट, मैंने नोट्स में डाल दिया है वैसे. निमोनिक ये है कि बेन 10 के ग्रैंडपा थे ना मेन कैरेक्टर, तो बेन्स ग्रैंडपा. तो BEN, बेन, बेसोफिल्स, eosinophils. Remember which cells are granulocytes? And which of them are? To just remember which are granulocytes. जब आपको पता चल जाए कि granulocytes कौन से हैं, तो जो नहीं सिर्फ दो ही हैं, एक granulocytes, वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है. तो बस granulocytes याद रख लो, ये आसान तरीका है याद रखने का. ठीक है. So that is it. Any other questions so far? ठीक है. So I'll see you all tomorrow, inshallah, शाम में ही. And then we'll cover this immunity, gaseous exchange, and nutrition. फिर उसके बाद next week we will have one class or two classes जिसमें viruses and bacteria and animal kingdom ये cover कर लेंगे. So I hope you were able to learn something from this. So Allah Hafiz and meeting.